अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे एवरीवन। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द क्वांटम पार्टिकल। इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं पार्टिकल लाइक नेचर ऑफ द फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वेव नेचर भी हम स्टडी कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि वेव जो है वो किस तरह बिहेव करती हैं एज ए पार्टिकल। उसके बारे में है ये लेक्चर, क्वांटम पार्टिकल। In the past, we considered particle and wave models to be distinct. The notion that both light and material particles have both particle and wave properties does not fit with this distinction. Experimental evidence shows, however, that this conclusion is exactly what we must accept. The recognition of this dual nature leads to a new model. ठीक है, नया मॉडल जो है वो क्या है? Quantum particle, which is combination of the particle model and wave model. In this new model, entities have both particle and wave characteristics, and we must choose one appropriate behavior, particle or wave, to understand a particle phenomenon. So we shall explore this model in a way that might make you more comfortable with this idea. We shall do so by demonstrating that an entity that exhibits property of a particle can be constructed from waves. वही चीज़ के पार्टिकल जो है वो किस तरह वेव से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो इसके बारे में हमने देखना है किस तरह वेव जो है वो पार्टिकल लाइक नेचर शो कर सकते हैं। लेट्स फर्स्ट रिकॉल सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल पार्टिकल एंड आइडियल वेव्स। आइडियल पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी वो क्या है? एन आइडियल पार्टिकल हैज जीरो साइज, therefore an essential feature of a particle is that it is localized in space. An ideal wave has a single frequency and is infinitely long as suggested by this figure. Therefore, an ideal wave is unlocalized in space. A localized entity can be built from infinitely long waves as follows. किस तरह से जो है वो पार्टिकल बिल्ट हो सकता है वेव से, वो देखिए फिगर में। ये देखें, इधर नीचे फिगर में, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये फिगर में देखें आपके पास एक वेव है और जीरो पे इसका क्रेस्ट है। इसी तरह एक और वेव है, इसका भी जीरो पे क्रेस्ट है। तो जब ये कंबाइन करेंगे, ये देखें जहाँ पे क्रेस्ट होगा वहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। However, जहाँ पे क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो कंबाइन होंगे वहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो रहा है। Imagine drawing one wave along x-axis with one of its crests at x is equal to 0 as at the top of figure this. ये figure है। Now draw a second wave of the same amplitude but a different frequency with one of its crests also at x is equal to 0. As a result of superposition of these two waves, beats exist as the waves are alternately in phase and out of phase. तो बीट्स फिनोमेना आपने पढ़ा होगा कि दो वेव्स ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी, स्लाइटली चेंज होता है फ्रीक्वेंसी में, जब कंबाइन करती हैं तो बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, बीट्स क्या होता है, कुछ पॉइंट्स पे आपके पास एम्पलीट्यूड जो है वो ज़्यादा मिल रहा होता है। द बॉटम कर्व इन दिस फिगर ऑफ द इज सुपरपोजिंग दीज टू वेव्स। Notice that we have already introduced some localization by superposing the two waves. A single wave has the same amplitude everywhere in space. No point in space is any different from any other point by adding second wave. However, there is something different about the in-phase points compared with out-of-phase points.
next, now imagine that more and more waves are added to our original two, ठीक है, अब दो जो हमने waves जो है डिस्कस की उसमें और ज़्यादा waves में वो ऐड की जा रही है. Each new wave having a new frequency. हर जो wave है उसकी एक नई frequency. Each new wave is added so that one of its crests is at x is equal to 0. तो ऐड इस तरह की जा रही हैं कि उनका जो crest है वो x is equal to 0 position पे है. With the result that all the waves add constructively at x is equal to 0. तो इस वजह से जो waves हैं वो x is equal to 0 position पे constructively add होती जाएंगी. When we add a large number of waves, the probability of a positive value of a wave function at any point x is 0 is equal to the probability of negative value, and there is destructive interference everywhere except near x is equal to 0. तो x is equal to 0 पे जो है वो probability यही है कि constructive interference होगा, उसके अलावा जो है destructive interference जो है वो आपको मिलेगा. Where all the crests are superposed. The result is shown. देखिए रिजल्ट किस तरह होगा. इस तरह के हमारे पास एक कंबाइंड जो है वो वेव बन जाएगी जिसका एम्पलीट्यूड जो x इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम होगा और बाकी पॉइंट्स पे ये कम होगा. The small region of constructive interference is called a wave packet. इस चीज़ को जो है हम वेव पैकेट का नाम देते हैं. ठीक है, वेव पैकेट जो है वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि एक पार्टिकल बिहेव करता है. This localized region of space is different from all other regions. We can identify the wave packet as a particle because it has the localized nature of a particle. The location of the wave packet corresponds to the particle's position. The localized nature of this entity is the only characteristic of a particle that was generated with this process. We have not addressed how a wave packet might achieve such particle characteristics as mass, electric charge, and spin. Therefore, you may not be completely convinced that we have built a particle. As further evidence that the wave packet can represent the particle, let's show that wave packet has another characteristic of a particle. To simplify the mathematical representation, we return to our combination of two waves. Consider two waves with equal amplitude to different frequencies f1 and f2. ये देखें different frequency f1 and f2 ये आप कैलकुलेशन ऑलरेडी भी कर चुके हैं. ठीक है, उसमें ये देखें आपके पास फार्मूला होगा cos a plus cos b equal to 2 cos of a minus b by 2 cos of a plus b by 2. तो y1 आपके पास a cos of k1x minus omega 1t and y2 a cos of k2x minus omega 2t. इनको कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, ये फार्मूला आपके पास. ठीक है, तो ये सम अप होके एक लेंथ इसी वैल्यू बन जाएगी 2a cos of k1x minus omega 1t minus k2x minus omega 2t over 2 cos of this. तो ये आपके पास है एक रिलेशन बन जाएगी मैथमेटिकल फॉर्म. तो इस मैथमेटिकल फॉर्म में देखें डेल्टा के जो है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं. डेल्टा के जो है वो k1 माइनस k2 है एंड डेल्टा ओमेगा जो है वो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 है. द सेकंड कोसाइन फैक्टर रिप्रेजेंट्स a wave with a wave number and frequency that are equal to the average of the values of the individual waves. ठीक है, तो वो individual waves की एवरेज के बराबर है. We देखें equation this the factor in scale brackets represent the envelope of a wave as shown by the blue curve. ये देखें ये हमारे पास वही वेव है. यहाँ पे हमारे पास ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है और 2a cos of delta k over 2 into x minus delta omega over 2 into. तो ये इक्वेशन है जो इस इनवेल्प को जाहिर कर रही है. This factor is also has mathematical form of a wave.
This envelope of the combination can travel through space with a different speed than the individual waves. ये देखें इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल वेव्स हमने कंबाइन की थी, जैसे कि पहले हमने कहा था वेव 1 वेव 2 और बहुत सारी वेव्स में कंबाइन की। तो अब ये जो हमारे पास वेव पैकेट है यहाँ पे, इसकी जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी किसी भी इंडिविजुअल वेव से। कैसे, उसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल, एज एन एक्सट्रीम एग्जांपल ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, इमेजिन कंबाइनिंग टू आइडेंटिकल वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, दो वेव्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। द टू वेव्स मूव विद सेम स्पीड, but the envelope has a speed of 0 because we have built a standing wave। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्टैंडिंग वेव है, तो इसलिए जो है आपके पास जो वेलोसिटी होगी एनवेलप की वो क्या होगी, वो 0 वेलोसिटी होगी स्टैंडिंग वेव के केस में। अगर स्टैंडिंग नहीं है तो उसके अलावा जो है वेलोसिटी वो इस इक्वेशन से आप फाइंड कर सकते हैं। For an individual wave, the speed is given by equation v is equal to omega over k। इंडिविजुअल वेव के केस में हमारे पास स्पीड जो है दैट इज v इज इक्वल टू ओमेगा ओवर k। दिस स्पीड इज कॉल्ड द फेज स्पीड ऑफ वेव इन वेव पैकेट। ठीक है, इसको फेज स्पीड कहते हैं वेव पैकेट में, बिकॉज इट इज द रेट ऑफ एडवांस ऑफ crest on a single wave which is a point of fixed phase। Phase speed can be interpreted as follows. The phase speed of a wave is the ratio of the coefficient of time variable t to the coefficient of the space variable x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? For a wave y is equal to a cos of kx minus omega t। The factor in equation 47 of the term of the form of a wave, so it moves with speed by the same ratio। आपके पास vg ग्रुप वेलोसिटी जो है that is equal to coefficient of time variable t divided by coefficient of space variable x। इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली डेल्टा ओमेगा ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा k बाय 2। तो सिंप्लीफाई करके डेल्टा ओमेगा और डेल्टा k आ जाएगा। इसमें देखें जो सबसे g है, the subscript g on the speed indicates that it is commonly called group speed या group velocity या group speed कहते हैं, और the speed of the wave packet। ठीक है, या wave packet की जो speed है यानी group of waves की that we have built। ठीक है, हमने कई सारी waves combine करके तो वो जो group of waves या wave packet बनाया है उसकी speed है। So we have generated this expression for a simple addition of two waves। ये सिर्फ टू वेव्स के लिए, लेकिन अगर वेव्स ज़्यादा हों, फॉर एग्जांपल व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स आर सुपरपोज्ड टू फॉर्म अ वेव पैकेट, दिस रेशियो बिकम्स अ डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव बन जाएगा। डेरिवेटिव कैसे? वी जी इज इक्वल टू डी ओमेगा ओवर डी के इज कॉल्ड ग्रुप स्पीड ऑफ वेव पैकेट। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एच कट। एच कट क्या है? इक्वल टू एच ओवर 2 पाई गिव्स Vg is equal to h cut d omega or h cut dk is equal to d h cut omega d h cut k, where h cut omega is equal to h over 2 pi
where h cut omega is equal to h over 2 pi into 2 pi f is equal to hf, that is equal to energy of photon, or hf is equal to E. So h cut k is equal to h over 2 pi dot 2 pi over lambda is equal to h over lambda, which is p momentum from de Broglie wavelength. आपको याद होगा. So Vg is equal to dE over dP. हमारे पास जो ग्रुप वेलोसिटी है that is equal to dE over dV, because we are exploring the possibility that the envelope of the combined waves represents the particle. Consider a free particle moving with speed u that is small compared with speed of light. The energy of the particle is its kinetic energy. तो उस केस में energy E is equal to E square over 2m. So put in above equation. पुट करके अगर डिफरेंशिएट करें अबव इक्वेशन में तो हमारे पास क्या आ जाएगा with respect to P. Vg is equal to Vp square by 2m, which is equal to 2p over 2m. और इसमें अगर वैल्यू पुट कर दें हम mv over m is equal to v, और Vg is equal to v, which is equal to u, यानी velocity, group velocity. So therefore, the group speed of the wave packet is identical to the speed of the particle. That is moderate to represent, giving us further confidence that wave packet is reasonable way to build a particle. ठीक है, तो number of waves अब combine करती हैं तो वो क्या बनाती हैं, wave packet जो कि behave करता है as a particle. देखिए आज के लेक्चर में हमने क्वांटम पार्टिकल जो है वो डिस्कस किया है, किस तरह मतलब वेव्स जो हैं वो मिलकर क्वांटम पार्टिकल जो है वो बनाती हैं या वेव पैकेट बनाती हैं जो कि बिहेव करता है पार्टिकल की तरह. उस केस में हमने देखा कि हमारे पास नंबर ऑफ वेव्स हैं, वेव 1 2 कंबाइन कर रही हैं और क्रेस्ट जो है x इज इक्वल टू 0 पे है. तो आपके पास मैक्सिमा जो है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे, जबकि बाकी पॉइंट्स पे जो है वो मिनिमा हो सकता है. तो जब ये वेव्स कंबाइन कर रही हैं तो एम्पलीट्यूड जो है इस पॉइंट पे आपके पास इंक्रीज्ड है. ये सिर्फ 2 वेव्स के लिए. फिर अगर आप उनको कंबाइन करते हैं फॉर नंबर ऑफ वेव्स तो उस केस में देखें आपके पास किस तरह से एक वेव पैकेट जो है वो बन जाता है. ठीक है, और वेव पैकेट जो है वो कैसे बिहेव करता है लाइक अ पार्टिकल. कुछ मैथमेटिकल रिलेशन है, उसको सॉल्व करके आगे हमने देखा डेल्टा की और डेल्टा ओमेगा. तो इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन हमने जो है वो जो है ग्रुप वेलोसिटी डिफाइन की. ग्रुप वेलोसिटी के बाद जो है हमने डेरिवेटिव किया कि किस तरह हमारे पास एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2 है. उसका हमने जब डेरिवेटिव निकाला तो हमारे पास जो है वो ग्रुप वेलोसिटी जो है वो u के इक्वल आई है. और देयरफॉर द ग्रुप स्पीड ऑफ द वेव पैकेट इज आइडेंटिकल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. यानी जो हमने वेव्स कंबाइन की थी, ग्रुप ऑफ वेव्स या वेव पैकेट जो है वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि एक पार्टिकल बिहेव करता है. तो यही हमारा आज का लेक्चर था कि जिस तरह पार्टिकल जो है वो वेव नेचर शो कर सकता है, इसी तरह नंबर ऑफ वेव्स अगर कंबाइन करें, ठीक है, तो वो ग्रुप ऑफ वेव्स बनाती हैं या वेव पैकेट बनाती हैं. तो वेव पैकेट जो है वो ऐसे ही बिहेव करता है जैसा कि ये पार्टिकल बिहेव करता है. सो विद दिस वी एंड टुडेस लेक्चर. इसके साथ साथ आप जो है वो कोर्स की भी तैयारी करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका इंशाल्लाह कोर्स भी हो जाएगा ऑनलाइन. So with this we end today's lecture. See you in the next lecture inshallah. Take care.